cut across to Pooja Shali, who's at the venue there. Let's hope we get through her connection. Pooja, over to you. Yes. All right, Nabila, here, you know, the fervor for me, I can tell you, it was unimaginable at one point in the Kashmir Valley to see people hoisting tricolour with their faces, speaking on camera. Many of them always supportive of the nation. Today, possibly, they have found the confidence to do that as well. And I find it that this hope needs to prevail, this hope to the government, as much the government's responsibility to do much more for the people of Kashmir. Here for the Bakshi Stadium, take a look at this. Take a look, and wherever the eye rolls, that there are people in thousands and lakhs who have gathered. It's anyone's guess how many people here are. And I've been speaking to so many, asking them, have they been brought here by force, as the National Conference and the Congress Party have said? Almost everyone who I've spoken to have said that they are here by decision and by faith. Listen to this. Listen to this. This is, you know, at one point, there was just so much fear to even be a part of a political rally, for example, of the Bharatiya Janata Party. Now, this is a decision. It was filled with risk in 2019. It was a big challenge. A lot could have gone on the other side. But to ensure opportunities, considerable peace. And remember, what does a Kashmiri really want? What has a Kashmiri really wanted? It is safety, security for their family. It is opportunities. It is growth like anyone else has. And why shouldn't a Kashmiri also get it? Too much of selfish politics that has gone on for too long. Too much bloodshed and too many deaths. Too many youngsters have lost their life in Kashmir Valley. I have not only been coming to the Kashmir Valley, and because it is my homeland, it is the land of my ancestors, I have seen Kashmir change for the worse over the years. And today, for me to sit here to know that people are hopeful, they believe that peace can come to this valley, and that politicians who only want perhaps their own selfish agendas need to take a step back. But remember, it's a big responsibility on the shoulders of Prime Minister Modi. The trust that Kashmiris have shown. Can Sachin possibly zoom in? Sachin, let's try and show, if there are only hundreds of people here, or as much as we try to zoom in into the balconies towards the stairs as well, people have come in. I spoke to people who have come from Baramulla, Bandipora, Gurez, from the border areas as well, from different areas. They've been here since 4 to 5 a.m. The temperature, you should know, is between 3 to 4 degrees. It is definitely a chilly weather in Kashmir. They're flaunting tricolour. Anyone who knows a little bit about Kashmir will tell you to even flaunt a tricolour, hold the national flag in your hand in public, wasn't really the safest thing to do in Kashmir. That has happened. But I truly believe Prime Minister Modi needs to work now for the artisans here, the agriculture, the farmers. They are the economy that Kashmiris depend on. There are people who've brought in with them flags of a Kashmiri knitwear that they had, the flag that they brought with them. They were hoisting that flag with them. They were hoisting the G20 that they had made, and I will show that to them, to you as well. To do that, to speak about it, means they are expecting also much more. They're expecting that they'll also be taken care of. And that is why they are here for Prime Minister Narendra Modi. Remember, it was on Prime Minister Modi's shoulders that this decision was taken. And everyone who was criticizing at that point, I had a word to say, give this time. This valley has been wounded for decades. Give it at least 5 to 6 years to see if this disruption can bring. And what do we see now? We don't see stone pelting. We don't see mass violence. And I'm glad to see that young boys and girls go to their schools, finish their education in town, which is natural or normal for you and I, was not normal for a Kashmiri child. Hartal, shutdown, encounters, bloodshed. A Kashmiri has seen everything that nobody across the country has seen. And yet, for them to finish that education in peace, that is what touches my heart. And you know, I'm slightly emotional today because I've seen Kashmir change for the better, and it means a lot. It means a lot to me because I never thought somebody will have the guts to do it. But my hope is that the peace will continue. It shouldn't end right now. It should continue for years to come as well, with cheers, with applause. That's what Prime Minister Modi about to arrive here in Kashmir. That's the final announcement. In just few minutes, that moment will happen.
I see that this is really close to your heart. What you know of Jammu and Kashmir, and what you've seen of it today, I'm sure it really speaks of a journey on how Kashmir has come this far, with the fact that they're able to hold the tricolour at a point like this. You said it was a risk at one point to even hold the national flag up. Today they're doing it with great pride, and that's what's really lovely to see. Pooja there joining us from the ground, Apache connection, but we see that we see her passion and her emotion right there on full display at a time when Prime Minister Modi is just about to take the stage. I'm going to quickly cut across to Pooja, speaking with some of the BJP workers who are absolutely ecstatic to see Prime Minister arrive in just a bit. आप लोग यहाँ पे जो लोग हैं, ये देखिए, खुद अपने से कश्मीरी आर्ट बना के लाए हैं। ये देखिए, कश्मीर के लोग यहाँ पर स्कार्फ, चाहे बीजेपी को हो, कुछ जरूर बीजेपी सपोर्टर्स और वर्कर्स भी हैं। मैं चाहूंगी आप आगे आए। यहाँ पे अपने हाथ से बनाकर कश्मीर के लोग ये मैप लाए हैं और आर्ट लाए हैं G20 और इंडिया का भारत। ये टेक्नोलॉजी जी मैम, हैंडमेड आपने जी हैंडमेड बनाया है। आज आप वो ऊपर करें, थोड़ा दिखाएं हमको। ये देखिए, दे हैव बॉट इट देमसेल्व्स। और देखिए, ऑपोजिशन का कहना है कि जबरदस्ती लोगों को उठा के लाया है। कितने लोगों को, क्या ये आपको लगता है जबरदस्ती आए हैं यहाँ पर एक बख्शी स्टेडियम में? हमें बताइए, ये कितना टाइम लगा होगा आपको बनाने में? 2 बंदों को मैम 2 महीने लगते हैं बनाने में। 2 महीने लगते हैं, और आप यहाँ लेकर आए हैं? यहाँ से G20 यहाँ से शुरू हुआ। इससे पहले हमने बनाया G20। हमारी खुशी जो मोदी साहब यहाँ आएंगे, यहाँ बहुत सारी मुल्क से आएंगे यहाँ लोग। हम तो आर्टिजन में बहुत परेशान है। हम आर्टिजन इसलिए तो हम आर्टिजन तो बहुत परेशान, लेकिन कुछ जो कोविड आया, कोविड की वजह से हम बहुत नुकसान हुआ। हमारे आर्टिजन्स के लिए और होना चाहिए, यहाँ पर काम होना चाहिए, मदद। जी मदद होना चाहिए, आर्टिजन को मदद होना चाहिए। हमने बैंक से भी लोन। आप यहाँ खुशी से आए हैं, अपने दिल से आए हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने? हम खुशी से इसलिए है, इसलिए तो हमने बनाया नेशनल फ्लैग, इसलिए तो हमारे खुशी है। कुछ नेता कहते हैं कि नहीं, आप लोग को जबरदस्ती बाय फोर्स जी मैम, एक और स्कीम है जो विश्वकर्मा स्कीम है। इसमें 18 ट्रेड्स है कि हमारा मकसद ये है कि इसमें हमारा ट्रेड भी होना चाहिए। आप यही कश्मीर के व्हाट कश्मीर हैज सफर्ड, दीज आर द फैमिली मेंबर्स of martyrs, of people who have sacrificed their life, whether in the line of duty as Kashmiris or simply civilians who were shot dead by terrorists, who have paid the price of trying to stand up for a Kashmir that is peaceful. They are from the Jammu and Kashmir police. They are from the civilians, family members who were not just only fighting for this country, but also just for civilians living their life. But, you know, and to call them, these are the family members who've got a due as well. I have one person who's a family member, sir. Yes, my father. Your father. मेरा डैडी था पुलिस में, वो सेक्रीफाइड हिज लाइफ ड्यूरिंग द नेशन। वो एक पुलिस ऑफिसर थे श्रीनगर में, वो शहीद हो गए। कब की बात होगी? 2001 में जी। तो अब आप यहाँ पे आए हैं? हाँ, हमें बुलाया गया है मॉर्टियर्स को। हाँ। जब से मोदी की सरकार आई है, तब से हमें बहुत रेस्पेक्ट मिल रहा है मॉर्टियर्स फैमिली की। हमेशा आपको हमेशा रेस्पेक्ट। और मैं मोदी जी का फैन हूँ। आई लाइक मोदी। उसने यहाँ पे J&K में, इंडिया में, पूरे इंडिया में देखो इतने कितने लोग आप देख रहे हो, उसने बहुत डेवलपमेंट की यहाँ पे। फादर की डेथ होना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल पुलिस में होती है। जी जी जी, तो फाइट करना भी उतना मुश्किल होता है। जी जी। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मोदी जी? आज अब आप सुन रहे होंगे, क्या चाहेंगे आप पुलिस? मैं आज जी जो भी यहाँ पे जो शहीद हुए हैं पुलिस फैमिली, मतलब जो भी मार्टियर हुए हैं, मैं मतलब मोदी जी से गुजारिश करता हूँ कि जो भी उनके वो भी मसले मसाइल हैं वो हल किया जाए। जी जी, हर एक को मतलब SRO केस मिलना चाहिए, उनकी कोई फाइल नहीं रुकनी चाहिए कहीं पर भी, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं। That's why we are getting to your voices. They know what Prime Minister Modi has done, but they hope that continue, that respect, that support will come. अभी परिवार में कौन-कौन है? आपके फादर के बाद आपके मदर है? मदर है मेरी, मेरा भाई है और मैं हूँ। तो
और मेरी फैमिली है। कितने पुलिस वाले जो रहे हैं जम्मू कश्मीर के, मैं जानती हूँ, उन्होंने जान दे दी और कंटिन्यू बिल्कुल देते रहते हैं। पुलिस बहुत ही अच्छा काम करा है यहाँ पे J&K में। आपको लगता है आज ये जरूरी था कि सिर्फ पॉलिटिकल रैली नहीं पर आप लोगों को भी याद करके बुलाया जाए जो हुआ है? बिल्कुल, जब भी कोई फंक्शन होती है, कुछ भी होता है, हमें बुलाया जाता है यहाँ पे। जब से मोदी जी आए हैं, जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से हमें ज्यादा ही रेस्पेक्ट मिलता है। पहले इतना नहीं होता था। पहले टेंशन अलग होता था अगर आप पुलिस की फैमिली से। जी पहले नहीं इतना नहीं बुलाते थे, इतना रेस्पेक्ट नहीं करते थे। थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा हमें मिलना चाहिए बिल्कुल। रिमेंबर इट्स नॉट इजी बीइंग अ कॉप इन J&K एंड आई होप योर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू यू। आपकी आवाज सुने और यही हम आपके ये वॉइसेस हम इंश्योर, आपने मुझे कहा था मैं बात करूं और मैं करूंगी, मैंने इंश्योर किया। Remember that these are the people who you see behind them, people who have fought for this country or simply lived their life. You sometimes don't have to be vocal in Kashmir. For example, the Hindu minority in Kashmir, the Kashmiri Pandits, even if they were not vocal, they have been shot dead, just targeted for their faith. And all of them, those family members have been brought here. They have been invited. They have been, remember, given the VVIP. This is the first barrier. This is just after this is the stage. So Prime Minister Modi has ensured that the martyrs family, martyrs is what I am of course using as a collective word to tell you about people who have lost their life. But you know, to invite them is to sending a message that they haven't been forgotten and that they'll be remembered. These small gestures, it may appear small, but to the families who've lost so much, it means a lot. In the background there, tricolor, Modi cheering. Prime Minister Modi arrived in Srinagar. Just look at that. Hear the cheers. Unbelievable scenes here in Kashmir this morning that we have seen. Well, that's Pooja Shale at the Bakshi Stadium. Well, Prime Minister has just arrived. He's going to be there in a few minutes. But these are live images of Modi in Srinagar. At this point, we know that there's a display, an exhibition of sorts that has been set up. It's usually the norm. The Prime Minister visits those exhibitions, these art fairs, interacting with some of those artists, and then we'll be moving towards Bakshi Stadium. It's a huge boost, certainly, to Jammu and Kashmir at this point. After 5 years of Article 370 abrogation, the Prime Minister's first visit. So we're looking at a fair of sorts, the kind of mobilization of crowds. It, in a way, also boosts business to the people around the area, especially of Kashmir, where even holding a public rally was a risk, a political rally or just a small event. A cricket match very recently turned fatal. So you know, in Kashmir, the situation for long hasn't been peaceful. To see a massive event where you're looking at lakhs of people gather, even if it is for the Prime Minister, one should laud the fact that the people, or at least the administration for the moment, have made people there feel safe and secure. And that's quite evident. Pooja Shali bringing us that sense from the ground. मोदी की कैप पहनी है आपने, ये क्या क्यों सपोर्ट आपको लगता है जरूरी है आज कश्मीरियों की तरफ से? देख लीजिए ना, मोदी जी ने ऐसी चीजें की हैं जो किसी ने आज तक नहीं की थी हमारे कश्मीर के लिए, और हमारे कश्मीर के ऊपर किसी ने आज तक ऐसा नजर नहीं डाला था। वो सोतली माँ वाले हरकतें की थी, जिसकी वजह से हमारा कश्मीर काफी पीछे था, बच्चों से लेके जवान तक, जवान से लेके बूढ़े तक। और इसलिए मुझे उनसे आपकी जनरेशन ने, हमारी जनरेशन ने बहुत देखा है कश्मीर में डिसरप्शन, शटडाउन, हड़ताल। आपके बच्चे अगर स्कूल जा पाते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी में, आपको लगता है वो बहुत जरूरी है अब कश्मीर? बिल्कुल जरूरी है। देख लीजिए ना, 370 हटाने के बाद बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोदी जी ने ऐसी चीजें करी और ऐसी चीजें लाई जिसकी वजह से आज बच्चे हमेशा, कोई दिन ऐसा संडे के बगैर, कोई दिन ऐसा होली डे के बगैर, कोई दिन ऐसा नहीं है कि बच्चे घर पे बैठे और बच्चे सब कुछ भूल जाए, और इतनी डिप्रेशन में आ जाते थे बच्चे और बहुत ज्यादा परेशानियां। आई लव मोदी की जो टोपी पहनी है, ये पहले तो नहीं कोई पहन पाता था कश्मीर में। ये कॉन्फिडेंस है, ये उम्मीद है आगे
कश्मीर की शांति? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि 93 मेरा बर्न है, तो मैंने ऐसा मतलब लाइफ में देखा है कि टेररिज्म, हाँ बिल्कुल, गन की मतलब जो गन की नोक पे लड़कियों की शादी करते थे, जमीन हटाते थे, लेते थे छीन के जॉब के लिए, बहुत सारी चीजें मैंने खुद देखी है अपनी आंखों से। मुझे सब मतलब इसलिए मैं इनकी फैन हूँ। ऐसा किसी चीज में नहीं हुआ है जो इनके बच्चे, जब फर्स्ट टाइम मैं आपको बताऊं, जब स्कूल गए हैं बच्चे, तो ऐसे अब भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि बच्चों को बोलते हैं हमें तो आजादी चाहिए। अभी भी ये चीजें मौजूद है, ये नहीं कि खत्म हो गई। बच्चों को अभी भी वो ब्रेन वॉश का अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये बच्चे जो आपके साथ बैठे हैं, ये बच्चे हमेशा खुश रहे और इनको वो कश्मीर देखने को मिले जो शायद आपको मुझे नहीं मिल पाया था। बिल्कुल, देख लीजिए ना, एक नौजवान जाता था, नौजवान जब घर से निकलता था तो ये होता था कि शाम को उसकी लाश आ जाती थी, वापस नहीं आता तो उसकी लाश आती थी। एक विधवा, एक माँ, एक बहन, एक बाप, उन पे क्या गुजरती। यहाँ पे जितने भी कब्रिस्तान है अगर देखेंगे ना आप, तो ये देखिए, आप खुद सुन रहे हैं कश्मीरी एक औरत से क्या कुछ देखा है उन्होंने, कितना अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, टेंशन था। और आज अगर कम से कम उम्मीद है, ये नहीं कहेंगे सब बदल गया है, लेकिन उम्मीद है कि कम से कम शायद जो कम्युनिटीज डर में थी, देखिए काफी लोग यहाँ पे, मैं दिखाना चाहूंगी आपको, जो सबसे पहले वीवीआईपी नेता नहीं बैठे हैं यहाँ पे, ये वो लोग हैं जिनके परिवार वालों को मार दिया गया, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस में थे, चाहे वो यहाँ पे सिविलियंस थे। इनको सबसे आगे इनवाइट करके बिठाया गया है, वो रिस्पेक्ट देना, वो इज्जत देना और ये कहना हमें याद है कि आपके परिवार वालों ने क्या किया है हमारे लिए, इंडिया के लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीर की शांति के लिए। ये बहुत मैटर करता है, सबसे आगे उनको पोजीशन देना। और देखिए, मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत मैटर करता है। मैं सालों पहले आई हूँ, मैंने देखा है कश्मीर टेंशन में कितना रहा है और ऐसा लगता था कि ये कभी नहीं बदलेगा। आज वो बदलते हुए दिन जो मैं देख रही हूँ, वो जरूरी है कि ये पहला स्टेप ले लिया गया है। अब 2047 का डॉक्यूमेंट जो प्रधानमंत्री देंगे वो देखना बाकी है। ओवर टू यू। All right, very emotional Pooja Shali there. Her ancestors came from Jammu and Kashmir. We know what has happened with the Kashmiri Pandits, literally chased away from their hometown, their home state. Many of them returning with faith that they are safe in their own homeland. And here you see huge numbers of people who have gathered at the Bakshi Stadium to take a listen at Prime Minister Modi 5 years after abrogation of Article 370. This certainly is a perception of safety. If you look at it very closely, the fact that huge people have gathered itself suggests that it's certainly boosting Jammu and Kashmir's security, safety and its economy at this point. On that note, we're slipping into a short break. We'll continue to track those developments with Pooja Shali on ground. Stay with us. हम लोगों ने इस तरह का बात बोला, कोई गलत बात नहीं हम लोगों ने बोला है। अब कोई डरने वाले हम लोग नहीं हैं और इनको बिहार की जनता ही नहीं, सारे देश की जनता सब दिख रही है, सब लोग समझ रहे हैं। एक हिंदू हो न गए, हिंदू रहते तो ये लोग बाल छिलवाते ना, बाल कहाँ छिलवाया, ये लोग सबको तो पता नहीं न है, तो बाकी लोग उनके भाई वही लोग छिलवाए, ये क्यों नहीं छिलवाए? इसलिए फेक कहा, कोई गलत नहीं कहा हमने।
लगता है लालू जी ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। उनको दिखता नहीं है कि हर भारतीय मोदी का परिवार है। अरे गरीबी हटाओ केवल एक नारा बन के रह गया था। अगर परिवार के बड़ों की तरह किसी ने फिक्र कर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उभारा है तो वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हम सब बच्चे हैं, वो सब हमारे बड़े हैं। मोदी जी ने इस देश की ऐसे फिक्र करी है जैसे परिवार का कोई बड़ा करता है। इसीलिए हम गर्व से कहते हैं, हम सब हैं मोदी का परिवार। Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. बौखलाए हुए ये लोग मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। उल्टा मोदी तो देश के गरीबों के पक्के घर बनवा रहा है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं। बंगाल की हर माताएं बहनें ये मेरा परिवार है। बांग्लार प्रत्येक मां बोनेरा अमर परिवार। मोदी के शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। 140 करोड़ देशवासी
140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। देश की हर माता, देश की हर बहन मोदी का परिवार है। All right, Prime Minister Narendra Modi in Kashmir. First time after abrogation of Article 370. These are live visuals that are coming in off the Prime Minister. But I'm going to take you through Pooja Shali speaking to the excited crowds, the BJP cadre particularly at the venue. Their excitement indeed unmatched. Modi's visit certainly boosts and uplifts the BJP cadre on ground J&K. अलग-अलग जगह खुशी आए हैं। खुशी है। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे कश्मीर? हमारी खुशनसीबी है, हमारा सौभाग्य है कि आज कई बरस के बाद माननीय प्रधानमंत्री Prime Minister स्वयं Modi पधारे हैं। on stage. She's there at the Bakshi Stadium, finally arrived. It's touted to have nearly 2 lakh people who are in attendance. Prime Minister Modi spotted in Kashmir for the first time. I'm going to stress, right after abrogation of Article 370, which the BJP faced huge opposition to. It's now been 5 years since the abrogation, and here you have the Prime Minister for the first time arriving in Kashmir's Bakshi Stadium. He's going to be speaking to a crowd of nearly 2 lakh people who've gathered from far and wide of Jammu and Kashmir to listen to the Prime Minister. He's there right ahead of Lok Sabha election. Of course, the BJP hopes to boost its prospects for Lok Sabha in southern part of Kashmir, while also laying developmental projects, foundation to that, with nearly 6,400 crores that's been promised for Kashmir. Strict security arrangements has been deployed. In fact, that entire area around Bakshi Stadium, nearly 2 kilometers surrounding, has been declared as a temporary red zone. You have private schools in fact that have been shut for today. Exams have been postponed for this event to be facilitated without interruption. Of course, safety is primary, and Kashmir hardly ever sees a gathering of this kind. The crowds there, swelling crowds, to be part of Prime Minister Modi's event. ऑलमोस्ट 10 साल बाद आ रहे हैं। 2015 में आए थे और बहुत ही अलग कश्मीर था तब। 2019 में स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया। फिर जब अब आए हैं 2024 में, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं कि मैंने जो वायदे किए थे वो काफी हद तक पूरे हो गए हैं। खुद देखिए, लोग मोबाइल पे चाहे फोटोज खींच रहे हैं, ये मोमेंट कैप्चर करना चाह रहे हैं। काफी लोग आपको बताएंगे कि ये कश्मीर में पहले सोचना भी मुश्किल था कि कोई तिरंगा लेकर हाथ में खड़ा होगा और वो कॉन्फिडेंस वो चेहरे के साथ वो दिखाएगा। देखिए, खुद देख लीजिए, ये लोग जो है काफी भाजपा से जुड़े हैं जरूर, लेकिन काफी लोग देखिए, याद रखें, हैं तो ये कश्मीर से ही, और ये वो एक चांस देना चाह रहे हैं भाजपा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री बात करेंगे, और सिर्फ देखिए, पॉलिटिक्स की बात नहीं है, राजनीति का तो मेंशन होगा, लेकिन हजरत बल श्राइन रेनोवेट हो रहा है, और भी यहाँ टूरिज्म को लेकर फोकस होगा और लोकल यूथ को लेकर फोकस रहेगा। बैक टू यू। हमें अपना आशीर्वाद देने पधारे हैं। The focus is going to be towards upliftment of the youth.
some of the promises that is expected to be made by the Prime Minister as part of his 6,400 crore projects that he's going to be laying down for Kashmir. As he addresses this public meeting, we're hoping to hear a bunch of them directed towards tourism, agriculture and upliftment of the youth largely. Of course, Kashmir, we know, is a Muslim majority region. We know an event of this kind with huge gathering is almost a never seen before affair. For the first time, at least after abrogation of Article 370, this kind of gathering that's been scheduled, Prime Minister Modi visiting the place, also gives a kind of confidence to the people of Kashmir that they are safe. Pooja rightly said a little earlier, at one point, flashing or wielding the national flag on the streets of Kashmir would have been frowned upon, or at least it wasn't as safe to do so. But here you have the crowds, many of them flashing the tricolour with great pride. It's for the Prime Minister's event in Bakshi Stadium. He's likely to speak in just a few minutes. In fact, we know that people from across Jammu and Kashmir, it's an opportunity for them to visit Kashmir at this point, Bakshi Stadium, to hear the Prime Minister. But we hear that many of them across Jammu and Kashmir in buses have made their way to Srinagar, where this event is precisely happening in Bakshi Stadium, to listen to the Prime Minister. So it's basically a boost and a confidence that people now have that moving around and about Kashmir areas in large numbers is a safe affair. There's security, of course, huge security that's been deployed with CCTV surveillance and areas around Bakshi Stadium that's been hugely barricaded. So automatically that confidence among people that they're in safe hands. एक इनिशिएटिव जरूर लिया गया है और उसमें लोगों का सपोर्ट है. ये सिर्फ फोर्स से नहीं होता. लोगों का अप्रूवल था जब लोगों ने देखा कि जब पूरे देश में, पूरे संसार में एक तरह से शांति है, क्यों कश्मीर में रोजाना जब बच्चे बाहर निकले तो ये भी नहीं पता होता था कि बच्चे वापस आ पाएंगे या नहीं. अभी As you know, experiences of Kashmiri Pandits largely and even Muslim families who were basically collateral damage for decades. Many innocent Kashmiris there who had to bear the brunt of Pakistan-sponsored terrorism at the border areas, where we see that people there lived largely in fear. Today, an event of this magnitude, where they're drawing crowds of nearly 2 lakh people, is certainly a big boost for the people of Kashmir, for their economy. Whatever be the political turn or the results when it comes to elections, but the fact that an event of this nature happening itself shows a big plus in terms of safety, progress towards a better economy, a safer Kashmir. In fact, we know this has come with fair share of politics, as opposition parties there condemning the Modi government. I'm going to cut across to Pooja Shali, who's at the Bakshi Stadium, for more on that. Pooja, if you can hear me, Prime Minister Modi there, what's really the spirit of the crowds? Could you bring us some voices? All right, so Nabila, as you can hear, these cheers that you see behind me, they're listening now to the Lieutenant Governor Manoj Sinha, and you know the waving of the hands that they are doing. It's primarily, you know, how many of them can really be forced, and you know there are, and I apologize to the viewers because there are of course audio issues here. But if I can, you know, while they are listening to the Lieutenant Governor, Sachin, if you can stay here, I will just get in one word from the प्रधानमंत्री स्टेज पे बैठे हैं अब, तो ये माहौल कैसा है, इसका सपोर्ट बताएं जो बाकी कश्मीर से बाहर. जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ तशरीफ रखा, ये पूरा कैमन बहुत खड़े से अच्छे तरीके से वेलकम किया. अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो बोल रहे हैं, हमें क्या, कहाँ से? बारामूला उड़ी से. उड़ी से LOC उड़ी से आता है मैम. यहाँ पे है एक खुशी का माहौल, कैसा? बहुत खुशी का माहौल है. अब लोगों ने चाहते हैं लोग अब की बार बीजेपी सरकार, क्योंकि जो गठबंधन है इसको हमने तोड़ना है और हिंदुस्तान से भगाना है. पूरा रेडी होके आए हैं सूट पहन के, बड़ा दिन कह सकते हैं कश्मीर के.
मैम हम तो कल सुबह 10 बजे के वहाँ से निकले हैं, कल 10 बजे से हमें निकाला गया है और हम रात को आके जीरो ब्रिज पे रुके हैं। उड़ी से 3000 लोग लेके हम यहाँ खुद से आए हैं, खुशी से आए। देखो मैम हम खुद से आए और मोदी जी का शुक्रिया अदा करने, कुछ मांगने नहीं आए। आज हम इनको देखने आए और शुक्रिया अदा करने जो ये 9 सालों में कर पाए और कांग्रेस ने 70 साल में नहीं करके दिखाया। अब ये जो कहते हैं जो लीडर बन के अब वो तोड़ना चाहते हैं, हम तोड़ने नहीं देंगे। So there is a certain confidence, and you know it's very interesting. It's a fair question. Why did Prime Minister Modi not come after 2015? Why almost after 10 years? Perhaps Prime Minister wanted to come himself when there was a certain confidence that he can talk about the changes that have happened. And there was a lot of risk involved. This could have completely gone on the other side with more bloodshed, more protest. But perhaps the people realized that this movement deserves a chance. And now it is up to the people and up to the government to get together and ensure that Kashmir, Srinagar becomes a world-class city. It's a smart city project that has been announced. When I came here, remember Kashmir is a tourist destination and yet it was not developed in the manner that international tourists would have liked to see. Now when I came here, when I landed here, from airport to my hotel, there were immediate changes. Projects, pending flyovers have been completed. Lights have been set up. There is of course security concern that does remain. Terror acts are still on. Kashmiri Pandits still being targeted. But people here, you can hear the cheers, you can hear the applause for Lieutenant Governor Manoj Sinha and for Prime Minister Modi. Perhaps because they're quoting all that has been done. And to tell you about, take a look now. Sachin, show to our viewers about the number of people who have come. From across Kashmir Valley since 4 to 5 a.m. they have been here. And perhaps I hope that this will continue. And will it be only about what has been done or much more? On the stage, as we can see, Member of Parliament of the Bharatiya Janata Party, Dr. Jitendra Singh, who's also the MOS, who's the Union Minister with independent charge of Ministry of Science and Technology, and of course Prime Minister Modi flaunting, if I've got it correct, a Kashmiri shawl while Lieutenant Governor Manoj Sinha is speaking. Prime Minister Modi realizes if Kashmir changes and toward peace becomes a place of growth, it's a legacy that Prime Minister Modi will also have. That one legacy that perhaps the Prime Minister can boast of, and that is why his focus remains Jammu and Kashmir. He was in Jammu earlier, he's now in Kashmir. Will these visits continue? Will there be more return? And right now, Manoj Sinha, the Lieutenant Governor, quoting of the changes that have sent. Now, of course, they're listening intently to what is being said. And the moment here of at the Bakshi Stadium, it's newly renovated. You see the arrangements that have been done. Also, let me tell you, before I forget, Bakshi Stadium is a football stadium. Earlier, there would be about 30,000 people. It was a normal big stadium for Kashmir. Now it is up to the international standards, FIFA standards. International football matches are expected to be organized here. So that's where you're sitting right now is worthy of international standards, where sometime later you will see more international matches that are likely to be organized. Wouldn't that be lovely to see? It's already started. There are leagues, matches that are organized, but here where I'm standing, to have international football teams to come to Kashmir, which was once called sadly as the hub of terror. And quickly, I want to also tell you, on this side are the family members of those who have died either in the line of duty, who have been targeted as innocent civilians. This is the first VIP zone. Right after this is the Prime Minister's stage. So as the VVIP area, they are the ones sitting, not the political workers, but the martyrs, the people who have sacrificed their life for Kashmir. They hope this support, this respect will continue to come. It's an important moment, and perhaps here on what Kashmir becomes will be a collective effort of the people of Kashmir and of Prime Minister Modi and of course of the government. And perhaps if there is any change, the change will be respected in terms of growth, irrespective of which party takes over. Just another quick glance. Let's go across that side. That's the central pavilion of the Bakshi Stadium. And you can see there are people sitting toward the corner as well. और इस बात का आपने विशेष ध्यान रखा है कि पहले से जो हमारे गुजर बकरवाल गद्दी से पीसीना भाई थे, उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए उन्हें भी सुविधा दी गई। ऐसे ही अति पिछड़ा समुदाय के लोग अदर बैकवर्ड क्लासेस को पहली बार पंचायतों। All right. Yeah, well, that's Pooja there bringing us a real sense of what she saw all the way from the airport to the Bakshi Stadium. We see set up
that was made to boost and show the proud beauty of Kashmir, where a boost to terrorism, a boost to tourism, and that was what was largely visible, is what Pooja says. She's still with us at the stage. You know, can you tell us why you are here? And I saw you wearing a I Love Modi cap, which, you know, I wouldn't have expected a Kashmiri woman to wear. What has led you to this? सबसे पहले मेरी जो अंग्रेजी है ना, मेरी जो इंग्लिश है ना, वो सही नहीं है, उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ। देख लीजिए कि आपने खुद देखा, पहले ऐसी चीजें, मतलब मैं पहले, इससे पहले ऐसी टोपी नहीं पहन सकते। अब दिल की खुशी है ना, वो बाहर निकली है ना, तो तभी मोहब्बत से पहनी है, और हम इनको देखने आए हैं। मैं नहीं, यहाँ कितनी हजारों तादाद औरतें, बहुत ज्यादा, अब नहीं है, पहले बहुत ही ज्यादा था, हद से ज्यादा था, अब नहीं है। अब देख लीजिए, आप खुद देख सकती हैं, मीडिया वाले मुझसे ज्यादा जानते हैं। जहाँ पहले 7 दिनों में कंटिन्यू 7 बार टेररिस्ट के हमले होते थे, अब वो अगर साल में 2 बार हुए तो ना के बराबर है, लेकिन पहले हमेशा होते थे। यहाँ पे कब्रिस्तानें भरी हुई है, जितनी हुकूमतें थी ना, कब्रिस्तानें सारी भरी हुई। अगर आप देख लेगी ना, कभी-कभी आप घर से निकलते थे, आपको नहीं पता था, डर लगता था, बहुत डर लगता था घर से निकलते हुए। अभी जैसे मैंने टोपी पहने, पहले मैं कभी नहीं पहन सकती थी। क्या भगवा कलर है, बहुत सारी होती है मेंटेलिटी लोगों की, सबकी अलग अलग डिफरेंट होती है, तो अब वो चीजें नहीं है, बेहतर है। क्यों आप सपोर्ट करते हो प्रधानमंत्री मोदी को, और क्यों? सिर्फ मैं नहीं करती हूँ, यहाँ लोकल भी आए हैं, सब करते हैं। यहाँ 2 लाख के करीब लोग हैं, आप देख सकती है, औरतें हैं, मर्द है, सब है। यहाँ सिर्फ पार्टी वर्कर्स नहीं है, पार्टी वाले नहीं है, यहाँ बाकी भी हैं। हाँ, इसलिए करते हैं कि इसमें आप खुद देख लीजिए, जहाँ पे एक माँ बेटे को सुबह रुखसत करती थी, शाम को उसकी लाश आती थी, या 2-3 दिन वो गायब रहता था, फिर उसे मतलब कब्रिस्तान में जाके मिलते थे उससे, कब्र में। तो आज जब आप देख लीजिए कि वो चीजें नहीं है, तो ये पसंद नहीं आएंगे, और क्या करेंगे? ये जरूरी है कि ये अब शांति आनी चाहिए, बहुत पेंडिंग, और क्या, बिल्कुल जरूरी थी। और ये कि शांति तो चाहिए हर तरीके से। घर में भी अगर मैं कहूँ कि भाई बहन में तू में रहेगा बंदा, वहाँ भी पीस चाहता है, हर जगह वही चाहिए इंसान को, हर जगह वही चीजें चाहिए, और वही सेंटिमेंट है। थैंक यू सो मच। अमीना इनका नाम है, शी इज बोर्न इन 1993, दैट्स व्हेन टेररिज्म वाज एट इट्स पीक। और आप ये सुन सकते हैं कि ये कश्मीर की रियलिटी है कि आप घर से कब बाहर निकले और फिर आप वापस आए ना आए, आपको नहीं पता। एंड दैट इज व्हाई यू सी द अपलॉज एंड द चीयर्स। अमीना इज ओनली वन ऑफ द मेनी women who I've spoken to in the past few years. Many of them were not supporters of the BJP. They wouldn't have even wanted Prime Minister Modi possibly. But today when they see the change, the peace that has come, the fact that cinemas have opened for youngsters like is normal for us across the country, that kids can go to school without an interrupted school system, which is normal for the rest of us, why shouldn't a Kashmiri get it too? And because of constant politicization of issues, even today, in fact, Amina, I want to ask you this. हम बात कर रहे थे पहले, जो एक ब्रेन वॉशिंग भी बहुत होती थी कि इंडिया हमारा नहीं है, इंडिया से अलग होना है, तो क्या वो कम हुआ है आपको लगता है? वो तो बिल्कुल खत्म हो गया है। जैसे मैं अपने छोटे भाई की बात करूं, वो भी कहता था कि उसे नहीं पता था, अगर कभी जैसे जनरल नॉलेज कोई जी के बुक होती है, उसे फ्लैग, ये इंडिया का फ्लैग है, सच्ची में ये इंडिया का फ्लैग है, तो ऐसे बोलते थे, ऐसा सुनने में आता था, ऐसे सुनने को मिलता था। लेकिन आज वो चीजें नहीं है, आज वो चीजें नहीं है। देख लीजिए आप, that is the hope, the change that has come, and with that hope I toss back to you again, Nabila. Perhaps, and you're listening to Kashmiris themselves of the changes that they have seen and why they are here for Prime Minister Modi. All right, it's really heartwarming to listen to the true Kashmiris who speak about change that's happened in the last few years. I'm going to leave you and our viewers here with a song that one of the Kashmiri locals, a young singer, has sang for Prime Minister Modi on the day of his arrival. Have a listen and do stay with us.
6 days after the arrest of TMC strongman Sheikh Shahjahan, accused of sexual harassment and land grabs in Sandesh Khali, Prime Minister Narendra Modi met the victims on Wednesday. The women of Sandesh Khali narrated their ordeal to Prime Minister, who was on a visit to Barasat, where he held a public rally. As the survivors turned emotional, Modi heard them like a father figure. Addressing the BJP's Nari Shakti Vandan Abhinandan rally in Barasat, 80 kilometers from Sandesh Khali, the Prime Minister asserted that every woman in Bengal is like family to him. The meet reverberated with chants of Modi. Modi, as the Prime Minister, stood with folded hands, expressing gratitude to the Nari Shakti for the rousing reception. Prime Minister Modi came down heavily on the Mamata Banerjee government, saying the TMC is protecting the criminals of Sandesh Khali. The TMC was quick to respond, accusing the BJP of hypocrisy. With the women vote increasingly becoming a decisive factor, will Sandesh Khali become a turning point for the BJP in Bengal? Bureau Report, India Today. Prime Minister Modi officially kicked off BJP's election campaign in January in Kerala's Thrissur with a rally of over 2 lakh women. Over a month later, on 28th